Hello everyone, and as I said before, okay, in some of my video I have told before regarding a study plan which was followed by one of our students, okay, Piyush Sethia. So today we have Piyush with us, okay, and he is right now currently pursuing his MMS from Jamnalar Bajaj, and he is right now in the second year. So he is done with all his placements, college अब last के बस 1-2 महीने बचे हैं, all chill life. So he told that sir, चलो we can go ahead and guide students towards this final phase which is so crucial for a lot of students towards the CET last final leg of preparation. So thank you Piyush firstly. Yes. Okay, thanks for coming. And in this video I am going to leave it to Piyush majorly, and so that I want him to share his story with you guys, saying that how did he start preparing from like for MBA firstly. CET तो बात की बात है, पहले MBA कहाँ से पिक्चर में आया, what made him think of MBA as a career option, and then how did he prepare for it. So I think you can share that with students first. Yeah. So as I said, so starting with my background, so I was into the commerce field. I completed my BCom, and as we know, like in those time when you are a topper, like say 90% in SSC, and you are doing BCom, so the first thing which everyone is CA कर रहा है नहीं कर रहा है. So yeah, I was also doing CA, started with it, gave a few attempts, and always like अरे result ही आया, अरे यार नहीं हो रहा है, अरे result क्या आया, अरे यार नहीं हो रहा है, ठीक है, still I want to try, don't want to give up. सब वही मोटिवेट कर देते हैं, नहीं CA में तो लगता है attempts करो, थोड़ा try करो, ये करो वो करो. So till my BCom was completed, I was pursuing CA, कर रहा था, try कर रहे थे, पढ़ रहे थे, बहुत घंटे पढ़ रहे थे, लाइब्रेरी जाके भी ट्राई किया, घर पे नहीं हो रहा, चलो लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, लाइब्रेरी में ट्राई करते हैं. Still it was not working out. So as my BCom got completed, that was the time I decided कि नहीं बस अब CA बहुत हो गया. So CA का कितना attempt दिया था, मतलब first level, group 1, group 2 and all that? So when it came to the entrance exam, that is CPT, वहाँ पे मैं third attempt में I cleared exact 100 आया था मेरे को. अच्छा, okay. So वो भी third attempt में आया था. Okay. And the worst part was जिसको पढ़ा रहा था वो first attempt में कर लिया था उसने. Okay. So तभी लगता हाँ कर लूँगा मैं भी, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा. And IPCC का भी it was like I think I gave 3 attempts. And that मतलब वही था मेन मोटिव, वही था कि हाँ जब तक मेरा BCom हो रहा है तब तक I can give a try, उसके बाद देखेंगे क्या है. Okay. So my BCom got completed, and then in the month of Jan around result आया कि भाई वापस IPC नहीं हुआ है as usual. So that was the time I decided okay let's try to switch into something new, and that was the time I decided कि भाई चलो अभी आते हैं MBA में एक बार देखते हैं क्या होता है. And I think it was close this time only, the first week या mid of February था जब I find out this classes. I met Abhijit sir, Heather sir, and started talking about them कि like क्या होता है MBA, CA से क्यों अलग है, and why should I go get into MBA. And then चलो ठीक है पढ़ा डिसाइड किया हाँ चलो फाइनली MBA ही करना है, and started studying. तो अभी सर ने बोला एक काम कर पीयूष, मार्च आ रहा है CET आ रहा है मार्च में, चल लेट्स गिव अ ट्राई. अरे सर सब्जेक्ट्स भी नहीं पता है, क्या होता है अंदर कुछ नहीं पता, कैसे एग्जाम दे दूं. अरे नहीं जस्ट देख लेना है लोग क्या करते हैं आजू बाजू एग्जाम में, हाउ इज द फील एंड ऑल. ठीक है सर दे देते हैं. बट दिस वाज आई थिंक मिड ऑफ फेब, राइट? हाँ वैलेंटाइंस डे आ रहा था इतना पता है. ओके ऑलराइट. सो तभी लाइक एग्जैक्टली 1 month बिफोर CET, ओके वी थॉट ऑफ चलो CET ट्राई करते हैं. हाँ तभी आई थिंक इट वाज 9th of March 2018 में. सो 1 month भी पूरा नहीं था, इट वाज क्लोज ऑन 20 days ओनली. एंड आई वाज लाइक कम्प्लीटली जीरो नॉलेज. तो मतलब मैंने तभी वीडियोस देखा 1-2 लोग का जो लोग बोलते हैं 1 month में CET प्रिपेयर किया, ये किया वो किया, कैसे होता है. बट स्टिल दे हैड सम बैकग्राउंड कि अच्छा मुझे पता है क्या होता है, मैंने शायद लास्ट ईयर दिया था ऐसे ही. बट मेरा आई वाज लाइक कम्प्लीटली न्यू, सब्जेक्ट्स भी नहीं पता थे. LR बोलते हैं, LR होता क्या है नहीं पता था. सो बट देन एक वो था कि हाँ इफ आई एम गिविंग एन एग्जाम, अगर मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, इफ आई एम पेइंग द फीस ऑफ द एग्जाम, आई विल गिव माई बेस्ट शॉट. सो हाँ दैट 20 days आई वर्कड वेरी हार्ड. सब एटलीस्ट द बुक्स विच सर प्रोवाइडेड, जो हमारा कंटेंट होता है पूरा क्लियर किया. मॉक्स हाँ लोग बोलते थे 15-20 मॉक्स तो नहीं दिए थे, बट हाँ 4-5 मॉक्स दिए थे. आई वाज स्कोरिंग डिसेंट अराउंड 120 क्लोज टू अराउंड. एंड हाँ भाई एग्जाम में एक यू नो लाइक पीपल से व्हेन यू आर नॉट अफ्रेड, जब हारने के लिए कुछ नहीं होता ना तब यू आर द बेस्ट. सो वही फेज में था. हाँ ठीक है एग्जाम देने जाना है, रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन था नहीं, बट इट वाज वेरी शॉकिंग. आई स्कोर्ड 98.6% and तब like 98.6 था. ओके ठीक है, ओके कूल नाइस. सो मतलब टॉप 2-3 कॉलेजेस छोड़ के 98.6. हाँ एक महीना विद नो प्रायर एक्सपीरियंस अबाउट MBA क्या होता है कुछ नहीं पता था. सो तभी भी चॉइस था कि हाँ वापस 1 साल इन्वेस्ट करके, पता नहीं 98.6 भी वापस आ पाएगा नहीं आ पाएगा. बिकॉज बहुत जन बोलते हैं यार नहीं 1 साल में पता नहीं वो तुम गिव अप मोड पे आ जाते हो वापस,
बोर होने लग जाते हैं सेम टू सेम पढ़ाई करना. सो यू शुड जो मिल रहा है ले ले, 20 दिन में तेरा जैकपॉट लगा है ले ले, एनएल डालमिया आया वगैरह, एक दो अच्छी एकदम डिसेंट इनफ कॉलेज मिल जाएगा तेरे को. 98.6 पे डालमिया टाइप मिल जाता. मिल जाता था. एंड वो टाइम भी फिन का ही था. एनएल डालमिया इज वेरी गुड फॉर फाइनेंस वेल. सो वही था कि हाँ एनएल डालमिया मिल जाएगा ले लो. बट देन आई वाज लाइक नहीं यार, एक चीज गिव अप करके आया हूँ एंड आई केम इनटू एमबीए विद द फोकस कि बस मुझे जेबी में ही जाना है. कैट भी इतना था नहीं प्रेफरेंस बिकॉज मुंबई का लोकेशन थोड़ा था. सो जेबी में ही जाना था. सो दैट वाज द टाइम आई वाज वेरी डिटरमाइंड कि नहीं भाई मैं एडमिशन नहीं लूंगा, आई विल गिव अ शॉट एंड आई वांटेड टू गिव द बेस्ट शॉट. सो बस जेबी ही टारगेट था. So that's how it all shifted and JB का preparation started. Then you prepared for the entire season, okay, and I think you also gave CAT, okay. So CAT दिया, फिर उसके अलावा CAT और CET दिया. हाँ बस CAT and वापस CET पे ही सीधा. Yes. So and that was CAT 2018. CAT 18. So CAT 18 happened and. So no, that was CAT 17. Yes, CAT 17. That was calculating. CAT 17. So CAT 17 था. So CAT 17 happened, and there you scored somewhere around 90%. Yes. 90%. Okay. So yeah. So what I particularly remember about Piyush is that so what we do, we select certain students who score above particular marks in their CAT mocks. Okay. So Piyush was one among them, and he really pushed very hard for CAT. But we used to see that he's struggling somewhere, probably in logic at times with respect to those heavy puzzles. Okay, cons में कभी कुछ ऊपर नीचे. Verbal was used to be one big challenge. Okay, CAT का verbal हमेशा drop हो जाता था. So he was struggling those areas, but somewhere he managed to score 90 percentile something. अच्छा, that 90 percentile was definitely not a good percentile from the CAT perspective. So now he's not getting much of good calls, okay, from the top IIMs and all of that. His target was very clear कि सर मेरे को अगर CAT के थ्रू जाना है तो उसका ड्रीम कॉलेज उसने FMS सेट किया था. Okay, so the reason I'm mentioning is here is this is very important for students out there to keep a target set, okay, and a dream college set होना बहुत जरूरी है. मैं किसी स्टूडेंट को पूछता हूँ कि कौन से कॉलेज में जाना है, they are like सर कोई भी अच्छा कॉलेज. So ऐसा नहीं होना चाहिए. Okay, so you should always have your dream set very clear. For Piyush, it was like CAT दूंगा तो FMS जाना है या CET देके JB जाना है. These were the two colleges for which he prepared, and he gave that entire year of attempt that he gave. So then FMS नहीं हो पाया because of the CAT score. That time I think he even took it more on himself, okay, which even I shared a video with Imran, one of our students, okay, before. So he also told the same thing कि जब CAT में उसका अच्छा score नहीं आया, so he took that as a motivation for himself that अब तो CET के लिए और अच्छा करना है. ठीक है. So rather than कि ये नहीं कि नहीं हो रहा है मेरे साथ, यहाँ नहीं आया वहाँ नहीं हुआ and all that, तो मैं छोड़ो ना, CET भी नहीं होगा. So that's purely the mind game that you have to play. That तुमको अपने लिए, अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए मोटिवेटेड रहना है. ओके, सेइंग दैट कि यस दिस इज माय अपॉर्चुनिटी लेफ्ट इन हैंड और इसका मैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करूंगा. And there I think he gave CET, and CET I think you scored how much exactly? 99.93. 99.93 was the score percentile. Okay, so score I think was around 140. 140, yes. 140. So and I showed also you guys one of the other videos. Okay, if you have not seen, make sure that you see that. Is the study plan that he followed, which was the last 100-day study plan that he followed, which worked wonders for him. Okay, so now that we are in the last 30 days, Piyush, so if you have to guide students कि लास्ट के 30 दिन में क्या गेम चेंज हो सकता है, तुम क्या कर सकते हो, if I just want you to put some light on that. So as we can see, it's just a few weeks left where the final day, you know, like this phase of all the entrance exams. So very few people I meet जो बोलते हैं बस मैं खाली selected exam दे रहा हूँ. So everyone I meet is like हाँ मैं ये भी दे रहा हूँ, ये भी दे रहा हूँ, ये भी दे रहा हूँ. So CET is one of the end कि भाई हाँ इसके बाद you have a gap again, and this is one of the most important exam which everyone is willing to give. And so what I'll say is this at this point of time you should not try and learn something very much new कि भाई ये मेरे को जरा भी नहीं आता अब इस पे फोकस करता हूँ. This is not the right time for it. उसका टाइम चला गया है. This is the time where you actually focus on अच्छा these are the things I know very well, these are the things which are my strength. Probably if you want to work on something, you can work on things like अच्छा ये मेरा question is taking me around 90 seconds, how can I reduce those 90 seconds to 60 seconds? That is where you want to work on, because CET is an exam जहाँ time is the most important factor. So people say हाँ CET में easy questions easy आते हैं. हाँ for sure the questions are easy,
but then to solve them within the time limit is the one of the most important thing which you should work on. So I'll say rather than learning something new, focus on your strengths कि हाँ this is my strength area and this is where I'll perform well, and so either speed reduce करो या accuracy बढ़ाओ. These are the two important factors which we should work upon. And so what I'll say is, you should divide the CET pattern and the CET curriculum into, like say LR में there are questions based on puzzles में भी you can say हाँ table वाला आ गया या calendar वाला आ गया. So उसमें मेरा strength क्या है, go as deep as you want कि इस पर्टिकुलर LR में puzzles में this is my strength area. LR में say if I coding decoding is something जो मेरे को accuracy देता है, but हाँ मेरे को I end up spending more than 7-8 minutes on that. So what should I do? Should I try and improve my time on it, or should I keep it as my section B कि हाँ मतलब अगर और कुछ नहीं आ रहा है तो मैं वहाँ पे time डालूंगा. This is where you want to focus on, और ये decide करना है before the D day, so that mocks में अभी implement कर पाओ and see क्या improvement हो रहा है तुम्हारे scores में. That's, I'll say, major part. So one thing towards the end of this video is, I understand that this is still almost a month or more than 1 month for your CET, but for certain students what happens that on the day of exam कुछ गड़बड़ हो जाती है, and that one day of exam you just screw it because something went wrong in those 2.5 hours. Something similar to that happened with Piyush. Okay, so that 2.5 hours that he had, something went wrong as per the plan that he brought. Okay, कि मैं ये हिसाब से पेपर दूंगा. Still he could manage because he changed his plan suddenly and then executed very well, and that is what we see towards the end the result. So I would want you to share that part story with the student, because that's, and I think you should watch this entire video towards till the end, because this part is very very crucial for you guys. Yeah. So what happens is basically we see many of our friends who are like, अरे इसको मॉक्स में बहुत सही आता था, but end of the day but अरे यार इसको इतना ही स्कोर आया, why so? So it is not, see, first part is कि तुम जो भी जितना भी months, 1 month, 2 months, 5 months, a year, 2 years, जितना prepare करते हो, that is very important. But the most important part is implementing that effort in those 2.5 hours. So बहुत बार क्या होता है ना, हम एक mindset से जाता है कि अच्छा हाँ मुझे ऐसे करूँगा, I'll do this way and ये चीज़ करके मेरा ये स्कोर आता है. But then that's not what happens. So as I said, मतलब I had my in-depth study done कि हाँ मेरा LR में these strengths, यहाँ मेरा accuracy है, यहाँ मेरा time है. So one of those important puzzles तो थे, but पता था, मतलब prior experience of CAT and CET से पता था कि LR में puzzles में तुम्हारी लगनी है. For sure, मतलब वहाँ puzzles तुम्हारा demotivate करने ही वाला है. So वो पता था, तो वो expected था. But then उसके अलावा क्या हुआ था ना, मेरे यहाँ puzzles in my set the number of puzzles has increased. और उनको इंक्रीज करने रिप्लेस किया था, they were replaced by input output was a tricky one and coding decoding हटा दिया था, and these were one of those areas जहाँ मेरा accuracy भी बहुत सही था, always 100%, and time भी बहुत कम लेता था. You didn't get coding decoding at all? No, so coding decoding was not there only. Okay. And input output I gave in the time, but मेरे को step 1 ही नहीं समझ रहा था. Step बाकी 2, 3, 4, 5, 6 सब आ गया, step 1 पल्ले ही नहीं पड़ रहा था. अच्छा. So one of the important thing which I did was, even though that was my strength area, मैंने at that point of time जब मैंने बाकी का पेपर नहीं देखा था ना, I did not spend time on that. मैं 2 मिनट डाला, मेरे को समझा मेरे को नहीं आ रहा है, I left it. मार्क करके छोड़ दिया कि बाद में अगर टाइम बचा तो I'll come back to it. Because एक चीज इतना याद रखना एग्जाम में, whenever you are giving any difficult question आता है ना, there will be some easy question for that, for sure. Because if it is difficult for you, it is difficult for everyone who is giving the paper. So अगर एकदम difficult है तो बाकी सबके लिए भी है, और अगर if difficult है नहीं तो आगे कुछ ना कुछ easy रहेगा, to so that the cutoff does not fall drastically वो fall नहीं होना चाहिए. So उसके लिए होता है. So then I gave the exam last में, there were 30 minutes left, बाकी सब complete हो गया था, and then there was like मेरे पास I had the option of 2 DI sets which are difficult, 3 puzzles which are difficult, and 1 input output. So that was them. Rather than spending time on DI in a haste and puzzles, I knew I'll try and work on my strength area. So तभी I went in for that input output, and मैं बोला चल, if I'm not understanding the step 1, I'll just go to the question once. Let's see questions में कुछ मिल गया तो. And to my surprise, the 4th question मेरे को सीधा step 1 का आंसर ही दे दिया. अच्छा. So even though मुझे लॉजिक नहीं पता step 1 में क्या आया, मुझे पता था step 1 ये होने वाला है. Okay. And उससे मैंने step 2, 3, 4, 5, 6 निकाल दिया, and I was able to solve the entire 5 questions. अच्छा. And after that point, there was a time when I had 20 minutes left.
एंड towards the end I had 20 minutes left. 5 minutes के अंदर हो गया था फिर वो. And मैं बहुत बार मतलब when I talk to students and when I also in lectures also people ask me, sir why do we solve difficult exams in question? मतलब पता है हम 7-8 मिनट से ऊपर नहीं देने वाले पजल्स में, तो वो 15-20 मिनट वाले पजल्स को प्रैक्टिस ही क्यों करें? So an answer to this. So I had these 20 minutes left and as I said there were 3 puzzles left and 2 DI left. अगर मैं उस माइंडसेट से रहता कि मुझे 7-8 मिनट के अंदर कोई पजल या मैक्सिमम 10 मिनट में 2 पजल सॉल्व करूंगा मैं, सो मेरा शायद एक ही पजल नहीं होता था. बिकॉज आई न्यू दोज वर द डिफिकल्ट पजल जो पेपर में डाले गए थे टाइम कंज्यूम कराने के लिए. सो आई वॉज इनटू इट कि बस 20 मिनट दूंगा एक ही पजल को, बट आई मेक श्योर वो पजल अच्छे से करके आओ. सो आई टुक 2-3 मिनट्स टू अंडरस्टैंड क्या सॉल्व करूं, पजल करूं, DI करूं, एंड देन आई मेड अप माई माइंड कि हाँ ये पजल करूंगा. इवन दो इट विल टेक मी 17-18 मिनट्स, आई विल सॉल्व इट. So I gave those minutes and then 15 मिनट में वो puzzle solve हुआ. And it is because of these 2 questions only कि I am in JBIMS right now. I have completed my MBA from JBIMS and वरना शायद नहीं हो पाता था. Yeah, because so we were going through that PDF, okay, and I think just 5 or 6 marks less than 140 you would have gone like below JBIMS. Like I think even 2 marks would not have given me that thing. Yes, so I think that was very important. Yeah. So that's like if I say in short the moral of the story. So do not press the panic button in your brain at that point and those 2.5 hours. Just remember there will be something, if there is some difficult जो तुम्हें नहीं आ रहा है या बहुत बार ऐसा होगा वो क्लिक नहीं होता है दिमाग में वो चीज. So leave it. Probably it is because काफी चीजें चल रही होती तुम्हारे दिमाग में. अरे LR में इसके पहले जो भी सेट किया था शायद विजुअल में या वर्बल में, अरे वो उसमें क्या होगा, somewhere our brain is behind, उसको छोड़ देने का. And one of the most important thing, other thing which I'll say is whenever you are switching between 2 sections, always remove half a minute to drink water. That will give a break between the 2 sections. So verbal से LR में अगर shift होना है बीच में वो break चाहिए. So always make sure इतना याद रखो कि कभी भी section switch कर रहे हैं तो take that half a minute and drink water. That will be very helpful. Alright, so I think we covered a lot of things in this video, and I would want this part of the video for everyone to watch because this last day goof-up thing happens with a lot of students. Okay, अभी CMAT हुआ था, बहुत से लोग ने आगे मुझे बोला सर लास्ट में ऐसा हो गया, ATMA हुआ था उसमें भी हमने goof-up कर दिया. I just don't want you guys that you are preparing for all your like this entire 1 year और उस दिन तुम कुछ goof-up करके गलत करके आ जाओ. That's the worst that you can do to your performance. So just make sure that you learn from this part that how do you handle D-day goof-ups. Okay, so I think we covered most of these things here. Okay, thanks again Piyush for coming. Thank you so much, sir. And do watch this video and do share it with your friends so that they know that how they can handle the CET preparation well. Thank you.